Hello and welcome back everyone. In this video we will going to study about a new chapter number 9, excess demand and deficient demand. The previous chapter is over. I'm totally handed over to you because you have to practice the numericals of it. Okay, in this video we will study about the meaning, definition and the explanation, some reasons and impact of excess demand. Now let's get started with the meaning of excess demand. Now as per the name it says excess, that means कुछ ज़्यादा है. क्या ज़्यादा हो रहा है? डिमांड. और डिमांड को हम कभी भी इंडिविजुअली नहीं देख सकते. इट इज़ फॉर इकोनॉमी एज अ होल, एंड इकोनॉमी एज अ होल को हम एग्रीगेट बोलते हैं. तो ये किस तरह की सिचुएशन हुई? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा बट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल जो है वो ज़्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू मेंशन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. सबके पास एम्प्लॉयमेंट थी, उसके बावजूद भी ज़्यादा थी. ठीक है, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं जहाँ पे दिखाया गया है एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू AD इज ग्रेटर देन AS. आपको ये बनाना आता है, आप बनाते हुए आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से इसको. एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट अब हम ऊपर जो देखेंगे वो क्या है, हमारा AD-1. हमने एक्सेस डिमांड की बात करी तो हम जो है अपने एग्रीगेट डिमांड को ऊपर की तरफ ले गए. एंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम गेट्स चेंज फ्रॉम E to E-1. नाउ जो वो गैप है दोनों के बीच में फ्रॉम E to E-1, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू अ गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स. किससे एक्सीड्स हुई? जितनी की रिक्वायर्ड थी, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड. अब क्या हुआ, क्या गैप है वो? एक्चुअल में हमने ज़्यादा डिमांड कर दी जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा थी. वाई? टू इस्टेब्लिश एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए. नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने वो डायग्राम बनाया था अभी उसी को हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देंगे. इन द अबव डायग्राम इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड एट एक्स एक्सिस एंड AD इज ऑन वाई एक्सिस. बोथ AD एंड AS कर्व आर इंटरसेक्ट. और वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं? एट पॉइंट E, विच इंडिकेट्स द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ा है मल्टीप्लायर के मैकेनिज्म में भी कि इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होती है AD कर्व राइजेस to AD-1 and it denotes to the situation of excess demand and the gap between them is termed as inflationary gap. यही सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देने हैं. Now moving on to the next is reasons for excess demand. Number 1 is rise in the propensity to consume. Now it is a very common situation in our home also that your mother says that you have to go to the market and buy some vegetables of ₹100. But what you need to do is you have to buy of ₹120 because your propensity to consume increased, your income increased. ये आप समझ सकते हैं मेरे नीचे के डायग्राम से, फ्लो चार्ट से. इनकम बढ़ी, एक्सपेंस लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल डिमांड बढ़ गई आपकी नॉर्मल डिमांड से, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड. तो क्या अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं और इसी को लिख सकते हैं? एक्सेस डिमांड में अराइज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फुल फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू सेव बिकॉज आपने सेव करना छोड़ दिया था एंड यू मूव टूवर्ड्स द कंजप्शन लेवल. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज रिडक्शन इन टैक्सेस. नाउ लुक एट द फ्लो चार्ट. 2010 में आप 10,000 रुपीज़ कमाते थे, 2011 में भी आप 10 ही कमाते थे, बट टैक्स जो है वो 10 से 5 हो रखा है. 10 जब आप 10% पे दे रहे थे तब आप 1,000 रुपीज़ दे रहे थे, जो कि 10,000 का 10% से हमने निकाला तो 1,000 आया. तब आप 9,000 पे कर रहे थे. अब जब 5% हो गया तो आप 9,500 जो है अब आपके पास बच पा रहे हैं. दैट इज़ योर रियल इनकम. सो हम क्या देखेंगे नीचे फ्लो चार्ट में कि आपकी जो इनकम थी वो एक्चुअल डिमांड से आप ज़्यादा कर रहे थे अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल डिमांड. फिर एक्सेस डिमांड हमारी आ गई थी. It may also occur due to increase in disposable income and consumption demand because of decrease in taxes.
तो हमने देखा कि गवर्नमेंट जब टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है तो उससे हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा बच जाती है, बट फिर भी हम एक्चुअल डिमांड ज़्यादा करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप नीचे फिर से फ्लो चार्ट देखेंगे, क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया किस पे, कंस्ट्रक्शन पे। किस लिए कंस्ट्रक्शन कर रही है वो, बिकॉज इट इज़ मेकिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल को लगाना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल लगाएगी तो उनको वेजेस भी देने पड़ेंगे, जिससे उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सो यू कैन रीड द डेफिनेशन नाउ। Rise in government demand for goods and services due to increase in public expenditure will also result in excess demand. So now it's clear that there is a rise in demand for goods and services. Due to that, public expenditure has to be increased, which results in excess demand. Now the flow chart follows up. Government expenditures on construction, then hires the employees, and then it raises the income. Now the fourth point, increase in investment. Now look at the flow chart once again. Main thing is about rate of interest and marginal efficiency on investment. We must have read this in investment function also. Now in 2010 the rate of interest is 10%, but the MEI, the marginal efficiency, the actual you are getting is 20% profit, which is 10% more than the previous one. In 2011 it increased, rate of interest is reduced by 5% and MEI remains the same, but again you are getting 15% more because of the reduction in rate of interest. That's how the demand rises. Now we can read the definition. When there is increase in investment due to decrease in rate of interest, the rate of interest decrease from 10 to 5%, or increase in expected return. And yes, we have seen the expected return was increased from 10 to 15%. Now I hope you get this. The fourth point, increase in investment. Okay, so let's move on to the next point, the fifth point, that is fall in import. Nowadays what we are seeing is that we reduced the import from China because of this corona, and there is a very higher decrease in the import from that country, which results in excess demand because we are not able to get the Chinese product, but yes, we need those products. So decrease in import due to higher international prices, that can be one case, but in comparison to domestic price may also leads to excess demand. अब क्या है इस पूरे में, that international prices ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से as comparison with the domestic prices, जिसकी वजह से demand ज़्यादा हो रही थी. बट अभी की सिचुएशंस लेके आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, that would be more attractive. All right, okay. Sixth point is rise in export. अब जब import हम बंद कर देंगे, fall कर देंगे, then we have to rise the export. Increase in exports due to comparatively lower prices of domestic goods or due to decrease in the exchange rate for domestic currency. Now what this point is saying, when each and every country stops the import from China, then they have to buy from some other country, and if they are getting it in comparatively lower prices from some other country, then there will be rise in exports. Or one more reason can be forex, जो रेट होता है आपका वो डिक्रीज हो जाए. Last is seventh point, that is deficit financing due to increase in the money supply caused by deficit financing. This is very simple. Okay, now this is another topic, the last topic, impact of excess demand. The first point is effect on output. क्या हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क पड़ता है अगर डिमांड हमारी एक्सेस होती है? Excess demand does not affect the level of output. Why? Because there is full employment all the time and there is no one sitting idle at home. The capacity of the economy is in full. Second point, effect on employment. Employment पे कुछ फ़र्क पड़ा जब full employment थी, तो there will be no change in the level of employment as the economy is already operating at full employment. And
there is no involuntary unemployment. The third point is effect on general price level. हाँ, इस पे ज़रूर फर्क पड़ेगा because excess demand leads to rise in the general price level. आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी. For example, petrol, and AD is more than AS. So that's all for today. I hope I'm able to make you understand this. Thank you so much. That's it.